Anand Vihar bus terminal in Delhi was jam-packed after hundreds of migrant workers gathered looking for buses to return to their hometowns after a 6-day lockdown was imposed in Delhi. The same bus stand had witnessed a huge rush of migrant workers last night and this morning. Migrant workers gathered at Anand Vihar paid no heed to social distancing norms as they were in hurry to catch buses to native places. According to the police, over 5,000 migrant workers gathered at Anand Vihar bus stand following Arvind Kejriwal's announcement about lockdown. Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal requested the migrant workers not to leave Delhi and assured them that necessary assistance would be provided. One of the migrant workers returning home from Delhi asked as to who would feed them if they stayed back in Delhi. यहाँ पे हमारा कोई समर्थन नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? दिल्ली छोड़कर ना जाएं, हमें खाना कौन खिलाएगा यहाँ पे? इसके जिम्मेदार कौन होगा? Another migrant worker said that they were returning home because they don't want to face the same problems they faced when the lockdown was imposed last year. जी यहाँ लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन लग गया जी कपल का काम करते हैं मादीपुर और कोई हम लोग 2-2 दिन भूखे रहे हुए हैं और कोई साधन यहाँ नहीं है और हम लोग 5-5 हजार रुपए लगाकर किराए के तब सीतापुर गए थे. After announcing the lockdown, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had appealed to migrant workers not to leave the national capital, saying it would be a small lockdown. पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे. उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं. ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का. दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा. आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है. दिल्ली में रहिए. मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े. आप दिल्ली में रहिए. यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे. मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी. मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए. Speaking about the migrant workers' crisis, Congress leader Rahul Gandhi took to Twitter and said that it was union government's responsibility to help migrant workers reach home. Priyanka Gandhi Vadra also took to Twitter and shared images from Anand Vihar bus stand stating that the government is not concerned about migrant workers. While announcing the lockdown, Arvind Kejriwal had said that less than 100 ICU beds remained in Delhi hospitals and there was a need to ramp up health infrastructure in Delhi. Delhi reported over 23,000 fresh cases and 240 deaths in the last 24 hours. The national capital has been reporting over 20,000 cases for the past few days.